Now, disadvantages of hard water. The first disadvantage of hard water is in domestic purpose like washing, cooking, bathing and drinking. In washing, more soap consumption is there when we are using hard water. Then cooking, in solutions we have read that whenever impurities are present in water, then the boiling point gets elevated. So similarly, if we are using hard water, then time taking for cooking will be more because boiling point gets elevated. Then in bathing, hard water leads to deposition on our skin. So because of this, more soap consumption will be there. Then in drinking, we have got health issues. When we drink a hard water, it affects the digestive system. Then industrial problems when we are using hard water are in textile industries, the desired color will not be obtained of the cloth. Then dyeing industries, again the same, when we are going to dye the cloth in hard water, the proper color or the desired color will not be obtained. In laundry industries, again the depositions are going to take place on clothes if we are using hard water. In pharmaceutical industries where drugs are prepared, the composition of drug can be changed or it can be even destroyed if we are preparing drug in hard water. Then we have a problem in steam generation in boilers. Now, if hard water is used inside the boiler, we have got number of problems. And whenever we are treating water inside the boiler, we are only going to remove the problems which are causing hardness or the dissolved salts or impurities which are going to cause hardness. Other impurities which are not causing hardness will not be removed. So the first impurity, the first problem which we encounter when we are using hard water inside the boiler is the formation of scale and sludge. When hard water is boiled inside the boiler, then what happens is impurities, they keep on getting concentrated and pure water keeps on getting evaporated. Now what is happening is pure water is evaporating and the impurities are getting concentrated. Because of concentration, they are going to reach a saturation point and then they are thrown out as precipitate. If the precipitate is, now we can have two types of precipitate, either it is sludge or it is a scale. If the precipitate is soft and non-adherent, means soft hai aur walls pe stick nahi kar raha hai, then it is a sludge. And sludge can be easily removed. Now, if the precipitate is hard and it is sticking to the walls of the boiler, that is known as scale, and scale cannot be removed easily. So, whenever we boil hard water inside the boiler, the impurities, they keep on getting concentrated and at a point, after a point, they are thrown out as precipitate. We have two types of precipitate, sludge and scale. Sludge is soft and it is not going to stick to the walls of the boiler, whereas scale is hard and it sticks to the walls of the boiler. Sludge can be easily removed, but scale cannot be easily removed. Then the disadvantage because of the formation of a scale and sludge will be they are poor conductors, they decrease the efficiency of the boiler, the heating value is reduced, and because of excessive heating, the boiler can even undergo explosion. So these are the problems encountered when there is formation of scale and sludge. Once again, I am saying sludge can be easily removed, but we cannot easily remove scale. Then the prevention. Sludge can be removed by blow down operation. Blow down operation means जैसे जैसे sludge form हो रहा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद हम उसे remove करते रहेंगे. Maybe 10-10 मिनट बाद या 20-20 मिनट बाद. That depends. So sludge can be removed by blow down operation. Scale can be removed by adding HCl or by using a scraper. Scraper means कोई भी चीज जैसे खुरचते हैं. That is a scraper. The second problem which we encounter when we are using hard water inside the boiler is caustic embrittlement. Caustic is NaOH and embrittlement is a type of corrosion. Now, whenever we have to soften hard water, one of the method is we add excess of sodium carbonate. So, excess of sodium carbonate is used to soften hard water. Now, what happens is
अब एक्सेस में ले रहे हैं इसलिए पूरा सोडियम कार्बोनेट सॉफ्टन करने में नहीं लगेगा, कुछ बचेगा। सो अनयूज्ड सोडियम कार्बोनेट जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और NaOH फॉर्म करता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगी, लेकिन जो NaOH फॉर्म हो रहा है वो बॉयलर के क्रैक्स में एंटर कर जाता है और वहां से जितना भी आयरन प्रेजेंट है, बिकॉज बॉयलर बॉडी इज मेड अप ऑफ आयरन, उसको डिसॉल्व करने लगता है एंड दैट इज नोन एज कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट. So when NaOH which is formed inside the boiler enters into the cracks of the boiler and starts dissolving iron, this process is known as caustic embrittlement. Now this can be prevented. First method is, instead of using sodium carbonate, we use sodium sulfate or we use sodium phosphate or sodium sulfate, or we can add tannin or lignine into the cracks of the boiler. इनको ऐड कर रहे हैं ताकि जितने भी क्रैक्स हैं बॉयलर में वो सब फिल अप हो जाएं. The third problem which we encounter when we are using hard water is priming and foaming. Priming means जब water boil हो रहा है तो अगर उसकी rate of steam formation बहुत ज़्यादा high है तो क्या होगा, जब steam form होगी तो वो अपने साथ साथ कुछ water droplets भी ले जाएगा, तो steam, वो उस steam को कहते हैं wet steam. So priming, it refers to formation of wet steam, that is water when evaporates carries some water droplet. अब ये हो क्यों रहा है? The first reason is steam की velocity बहुत ज़्यादा है. Second reason is dissolved salts जो हैं उनका concentration बहुत ज़्यादा है. Third reason, हम sudden boiling कर रहे हैं and जो बॉयलर की डिज़ाइन है वो बहुत प्रॉपर नहीं है. But priming can be prevented by adding a steam purifier, and if we can, then we should maintain the rate of steam formation, or the rate of steam should be maintained as constant. Then we have foaming. जब भी वाटर को हम बॉईल करते हैं तो हमेशा बबल्स फॉर्म होते हैं, लेकिन वो बबल्स कैसे होते हैं, फॉर्म होते हैं और वो ब्रेक हो जाते हैं. बट फोमिंग मीन्स स्मॉल परसिस्टेंट बबल्स आर फॉर्म्ड. स्मॉल परसिस्टेंट बबल्स मीन्स बबल फॉर्म होने के बाद वाटर सरफेस पे फ्लोट करेगा. और ये होगा क्यों? क्योंकि पानी में या तो ऑयल प्रेजेंट है या जो सोल्यूट है सरफेस पे और बल्क में उसका कंसंट्रेशन अलग अलग है. सो इफ ऑयल इज प्रेजेंट इन द वाटर और अनइक्वल सोल्यूट is there on the surface and in the bulk, then foaming takes place. And due to foaming, the efficiency of the boiler is going to decrease. But हम ये foaming prevent कर सकते हैं by using an anti-foaming agent or by adding sodium aluminate. So by these two ways, the foaming can be overcome. Then the last problem which we encounter when we are using hard water inside the boiler is boiler corrosion. Boiler corrosion means the body of the boiler undergoes corrosion. This corrosion is taking place. The first reason may be dissolved oxygen. Now 8 ml पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन पानी में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन जब हम वाटर बॉईल करते हैं तो यही ऑक्सीजन बॉयलर बॉडी जो कि आयरन की बनी हुई है उसके साथ रिएक्ट करने लगता है. सो ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द आयरन बॉडी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड वी गेट फेरस हाइड्रोक्साइड. ये फेरस हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल है बिकॉज Fe की का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, इसलिए इट फर्दर अंडरगोज ऑक्सीडेशन फॉर्मिंग रस्ट. सो दैट इज हाउ रस्टिंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ dissolved oxygen. Now this rusting can be prevented अगर हम वाटर में ऐड करें सोडियम सल्फाइड, हाइड्रोजीन और सोडियम सल्फाइड. ये तीनों जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे then these are the products which are formed. Now these products, even if they are present in water, they are not going to cause any harm. So that is how we can prevent this rusting because of presence of oxygen. The second is because of the presence of dissolved carbon dioxide. अब कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है अगर पानी में डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं और वो डिकम्पोज करें. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जब डिकम्पोज करेगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है. अब एसिड फॉर्म हो गया और कोरोजन के लिए मीडियम क्या होता है हमारा? एसिडिक. सो जैसे ही एसिड फॉर्म हुआ इट विल स्टार्ट, द बॉयलर बॉडी विल स्टार्ट कोरोडिंग. नाउ दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग
अमोनियम हाइड्रोक्साइड. सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और एक कंपाउंड फॉर्म करेगा अमोनियम कार्बोनेट का, जो कि हार्मफुल नहीं है. The third reason why the boiler body can undergo corrosion is dissolved salts. अगर वाटर में dissolved salts बहुत ज़्यादा present हैं तो क्या होगा, हर सेकेंड स्टेप में HCl प्रोड्यूस होगा और हमें पता है कि HCl जब भी एसिडिक मीडियम होता है तो कोरोजन का रेट फास्ट हो जाता है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर डिजॉल्व सॉल्ट वाटर में मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रेजेंट है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और HCl. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट गोइंग टू कॉज हार्डनेस, सो वी आर नॉट गोइंग टू रिमूव इट, एंड इवन इफ इट इज प्रेजेंट इन वाटर इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी हार्म, बिकॉज OH आयंस कोई हार्म नहीं कॉज करेंगे. बट HCl जो फॉर्म हो रहा है वो बॉयलर बॉडी के साथ रिएक्ट करेगा. बॉयलर बॉडी इज मेड अप ऑफ आयरन एंड वी गेट FeCl2 and hydrogen is released. This FeCl2 again reacts with water forming ferrous hydroxide and again HCl is produced. Ferrous hydroxide because it is having OH ions, so again it is not going to cause hardness. HCl फिर boiler body के साथ react करेगा, फिर FeCl2 produce हो रहा है और hydrogen produce हो रहा है और ये reaction ऐसे ही बढ़ता रहेगा. इसको कहते हैं chain reaction. हर second step में HCl produce हो रहा है और because HCl produce हो रहा है इसलिए boiler body में corrosion होगा. Now this type of corrosion, because of the presence of dissolved salt, can be prevented by treating water, and water can be treated by two methods. One is the internal method, the second is the external method.